fundamental identity of a people. Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one forms a collective identity. One has many set of identity that exist prior to a constitution, but by agreeing to certain basic norms and principles, one constitute one basic political identity. Second, constitution norms are the overreaching framework within which one pursue individual aspiration, goals and freedom. The constitution set authoritative constraint upon that what one may or may not be. It defines the fundamental value that we may not trespass. So the constitution also gives one a moral identity. Third and final, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. If one look at constitution around the world, they differ in many respects. In the form of government, they enjoin in many procedural detail, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a norm of government that is democratic. In some respect, most claim to protect certain basic rights, but constitutions are different in the way they embody conception of national identity. Most nations are an amalgamation of a complex set of historical traditions. They weave together the diverse group that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by being ethnical German. The constitution gave expression to this identity. The Indian constitution, on the other hand, does not make ethnic identity a criteria for citizenship. Different nations embody different conceptions of what the relationship between the different region of a nation and the central government should be. The relationship constitutes the national identity of a country. The authority of a constitution. We have outlined some of the function as a constitution performs. This function explains why most society have a constitution, but there are three further questions we can ask about constitution. What is constitution? How effective is constitution? constitution किस प्रकार इफेक्टिव है? Is a constitution just क्या constitution ही सब कुछ है? In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specify how the state is to be constituted and what norms it should follow. बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक जस्ट डॉक्यूमेंट है जो बताता है कुछ आर्टिकल्स को और बताते कि कैसे स्टेट काम करेगी और क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे. When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. So हम किसी भी अगर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं तो वो जस्ट इसी डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं. लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड किंगडम don't have a single document that can be called as constitution because they don't have any written constitution. Rather, they have a series of documents and decisions that are taken collectively are referred to as a constitution. It means that in UK they don't have a written constitution, but they also have they have the documents and decisions which they collectively form. So they referred as a constitution. So we can say that constitution is the document or set of documents that seek to perform the function that we mentioned above. इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन वो किस एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें रूल्स और रेगुलेशन बताता है और स्टेट्स को बताता है कि किस प्रकार उन्हें गवर्न करना हो और नहीं. बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर. दे वर mere words existing on a parchment. The crucial question is how effective is constitution? What makes it effective? What ensure that it has a real impact on the lives of people? Making a constitution effective depend upon many factors. लेकिन क्या सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स होना ही काफ़ी है? नहीं, हमारे पास और भी सारे क्वेश्चन हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार इफेक्टिव है.
mode of promulgation. This refers to how a constitution come into being, who crafted the constitution, and how much authority did they have. In many countries, constitution remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular, do have the ability to carry the people with them. मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कैसे इसको अथॉरिटी मिली. कुछ कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलिट्री द्वारा बनाया गया है, जो कि डिफिंक्ट है. द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स क्राफ्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट. यानी कि यूएसए, साउथ अफ्रीका और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बनाए गए हैं. ऑल्दो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर. जैसे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई थी, जो दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 के बीच फॉर्म की गई थी. और इसने हमारे सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था. दैट हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलोंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर. द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू एनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द fact that it has drawn up by people who enjoyed immense public credibility. किन्होंने बनाया? उन कैंडिडेट्स ने जिनके पास इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, जो जनता के द्वारा चूज़ किए गए थे थ्रू इलेक्शन, एंड इलेक्शन विल बी डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड बोथ इन द फॉर्म. Who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross of sections of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. The final document reflects the broad national consensus at the time. Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of the constitution. The Indian constitution was never subjected to such a referendum, but nevertheless carried enormous public authority because it had the conscience and backing of the leaders who were themselves popular. Although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provision. Therefore, the authority of people who enacted the constitution helped determine in parts its prospectus for a success. Balanced institutional design. Constitution are often subverted not by the people but all small groups who wish to enhance their own power. Well crafted इंस्टीट्यूशनल कहने का क्या मतलब है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्ट किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी सेक्शन को डिनोट नहीं करता है, वो सभी को पावर देता है, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को बल्कि लोअर सेक्शन को या फिर सप्रेस सेक्शन उनको भी अपनी पावर दिखाने का पूरा मौका देता है, उनकी पावर को भी एनहांस करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन. वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि सभी को पावर देता है, ना कि किसी एक को देकर किसी दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दबाने का काम करता है Constitution. One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly of the power. यानी कि कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पास मोनोपोली होगी पावर की. Everyone has the right to get the power through constitution. This is often done by fragmenting power across different institutions. The Indian Constitution, for example, horizontally fragment power across different situations like legislature, executive and judiciary. Horizontally fragmentation of the power means that legislature, executive and the judiciary, all of them have equal powers. All of them are dependent on each other. They don't have a superior one of them. Like
executive and the judiciary, and even independent statutory body like election commission. This ensures that even if one constitution wants to subvert the constitution, other can check its transgression. An intelligent system of checks and balance has facilitated the success of Indian constitution. Another important aspect of the intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between the certain values, norms, प्रोसीजर्स एंड अथॉरिटीज़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इस तरीके इंटेलिजेंटली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो जितने भी वैल्यूज़ होते, नॉर्म्स होते, प्रोसीजर होते, उनके बीच में एक राइट बैलेंस बनाने का काम करता है। एंड एट द सेम टाइम अलो थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन दी ऑपरेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग, और वो फ्लेक्सिबल भी है साथ के साथ, अगर किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं वो उनको अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ ए चेंज, यानी कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाए कि उसमें बिल्कुल भी चेंजेस ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो, तो वो इस तरीके से काम करेगा जैसे कि एक बहुत सख्त चीज़ पे प्रेशर डालना, और प्रेशर डालने से वो ब्रेक हो जाती है इस तरीके से। विल गिव नो सिक्योरिटी प्रिडिक्टेबली, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सिक्योरिटी भी नहीं देता, प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी ऑफ पीपल भी नहीं देता। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग दैम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो बैलेंस क्रिएट करता है कोर वैल्यूज़ और न्यू सर्कमस्टांसेस के बीच में। कोर वैल्यूज़ वो होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का बनता है तो उसकी मेन बेसिक वैल्यूज़ क्या होती है जो हमें थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ मेंटेन करके रखनी होती है। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो एक कोर वैल्यू का काम करते हैं, और न्यू सर्कमस्टांसेस जैसे कि टाइम टू टाइम हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो जाते हैं, लाइक प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, technologies changes adapting by the constitution. So these changes are new changes which are adapted by all of the constitution of the world. You will notice the wisdom of maker of the Indian constitution in the chapter of the constitution as a living document. So that's why our constitution maker says as a living document, because living person is that who can adopt the changes or anything, anywhere, anytime. Same like our constitution also adapt all the changes which we needed to change time to time. By striking a balance between the possibility to change the provision and the limit on such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. This arrangement also ensures that no section or group on its own subvert the Constitution. Therefore, it determines whether a Constitution has authority. You can ask yourself, were the people who enacted the Constitution credible? This question will be answered in the remaining part of the. Secondly, did the Constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the Constitution? देखिए इसमें पहले क्वेश्चन बताया गया है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्या वो क्रेडिबल है इसके लिए। इस चीज़ का हमें आंसर नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है चैप्टर का, जबकि सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो पावर ऑर्गेनाइज की गई वो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज की जाए, कि इस तरीके से ना हो कि एक की पावर दूसरे के ऊपर थोपी जाए या फिर वो उसको दबा के रखे। ये इंटेलिजेंटली subvert the constitution. Also is the constitution the locus of people hopes and aspiration. The ability of the constitution to command voluntary allegiance of the people depend to a certain extent upon whether the constitution is just. What are the principle of justice underlying? How was the Indian constitution made? Indian constitution कैसे बना? Let us find out how the institution was made. Formally the constitution was made by the constituent assembly. The first पॉइंट इज़ दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था, वो विच हैड बीन इलेक्टेड बाय अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि बिफोर 1947 द कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड दीज पीपल्स मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946. इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को. एंड रिसेंबल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर divided India on 14 August 1947.
Its members were chosen by indirect election by the members of the provincial legislative assembly. इसके मेंबर जो चूज़ किए गए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किए गए थे from provincial legislative assemblies that have been established under the Government of India Act 1935. जो provincial legislative assembly बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet known as Cabinet Mission. जो Constituent Assembly है उन्होंने रफली जितने जो प्लान किए थे वो ब्रिटिश कमेटी के द्वारा बनाए गए थे जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है. इसमें क्या क्या प्लान थे? ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट प्रोपोर्शनली टू देयर रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ 1:10 लाख. यानी कि जितने भी हर एक प्रोविंस में, हर एक प्रिंसली स्टेट में और हर एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स में पॉपुलेशन को 1:10 लाख के थ्रू डिवाइड किया जाएगा. एज अ रिजल्ट द प्रोविंस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स वाइल द प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड ए मिनिमम ऑफ 93 स्टेट. यानी तो इनमें डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया था प्रोविंसेस में आया था इलेक्ट किए गए थे 292 मेंबर्स, वेयर एज इन प्रिंसली स्टेट्स द अलॉटेड मिनिमम सीट इज़ 93 सीट्स. The seats in which province were distributed among the three main constitution communities, Muslim, Sikhs and General, in proportion to their respective populations. और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें सीट को रिलीजन के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कि मुस्लिम, सिख और जनरल उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेड बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. जो ये मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो आप बस ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जैसे अब 3-4 कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, उसमें से आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, देन सेकंड किसको, थर्ड किसको, तो उसके बेस पे उसका मेंबर को चूज़ किया जाता है. द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेंट. प्रिंसली स्टेट में इलेक्ट किए गए थे पर्सनल कंसल्टेशन से. The previous section discussed the three factors that what make a constitution effective. How far does the constitution pass this test? Composition of the constituent assembly. Constituent assembly में क्या क्या चीज़ थी, एज पर क्या क्या चीज़ें से किस किस प्रकार के लोग थे उसमें और क्या क्या उनकी अथॉरिटी थी, उसके हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में किस चीज़ का कंपोजिशन था. सो एज अ सीक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 दोज मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरी विच फॉल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. यानी कि 3 जून 1947 को जितने भी मेंबर इलेक्ट हुए थे टेरिटरीज़ में जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आते हैं उनको सीज़ कर दिया गया है, यानी कि वो पक्के हो गए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर. एंड द नंबर इन द असेंबली वाज रिड्यूस टू 299 और जो नंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो कम कर दिए गए 299 तक. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड इन 26 नवंबर 1949 और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया वो 26 नवंबर 1939 को किया. 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950, जिसमें से 284 जो मेंबर थे वो प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को. एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली, और उन्होंने सिग्नेचर किए कॉन्स्टिट्यूशन के एज दैट कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड. द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द हार्डोनियस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलिस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा
वायलेंस भी फेस किया जो हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन है वो, बट इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फेमस दैट दे वर नॉट only able to draft a constitution under immense pressure but also learned the right lesson from the unimaginable नेबल वायलेंस। यानी लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए वो किया इतने सारे प्रेशर के साथ, और एक अच्छा लेसन भी सीखने को मिला इस सारे वायलेंस से जो हमारे भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम हुआ था। But this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. Although the members of the Assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the Assembly a representative body. Members of all religions were given representation under the scheme described above. हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हर एक रिलीजन से रिलेटेड लोग इलेक्टेड थे। इन एडिशन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, यानी कि 28 मेंबर शेड्यूल कास्ट में से भी थे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली। पॉलिटिकल पार्टी में जैसे हम जानते हैं कांग्रेस डोमिनेट में थी। एज मैनी एज 82% ऑफ द सीट इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन के बाद भी 82% सीट्स कांग्रेस के पास थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच ए डाइवर्स पार्टी, जबकि इसके बावजूद जो कांग्रेस थी अपने आप में ही बहुत डाइवर्स पार्टी थी, उसमें भी डिफरेंट रिलीजन के कास्ट के लोग शामिल थे। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम only from the fact that it was broadly through not perfectly represented. It comes from the procedure it adopted. It framed the constitution and the value of its members brought to their deliberation. While in any assembly that claim to the representative, it is desirable that diverse section of society participate. It is equally important that they participate not only as a representative of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. There were often disagreements amongst members, but few of these disagreements would be traced to members protecting their own interest. There were legitimate differences of principle, and the differences were many. Should India adopt a centralized or decentralized system of government? What should be the relation between the state and center? What should be the power of the judiciary? Should the constitution protect property rights? Almost every issue that lies at the foundation of a modern state was discussed with great sophistication. Only one provision of the constitution was passed without virtually any debate: the introduction of a universal suffrage, meaning that all citizens reaching a certain age would be entitled to be voter irrespective of religion, caste, education, gender of the or income. So while the member felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other matter was seriously discussed and debated. Nothing can be a better testament to the democratic commitment of this assembly. The constitution drew its authority from the fact that members of the constituent assembly engaged in what one might call public reason. The member of the assembly placed a great emphasis on discussion and reason argument. They did not simply advance their own interest but gave principal reason to other members for their position. Their very act of giving reason to others makes you move away from simple and narrow consideration of your own interest, because you have to give reason to other to make them go along with your viewpoint. The voluminous debates in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason at its best. These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapters in the history of Constitution, make equal in importance to the French and American reunion procedure. The importance of the public reason was emphasized in the mundane procedure of the Assembly as well. The Constituent Assembly had 8 major committees on the different subject. Usually Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel or B.R. Ambedkar chaired these committees. These were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar has been a bitter critic of the Congress and Gandhi
accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. Patel and Nehru disagree on many issues. Nevertheless, they all worked together. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. Usually, an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed by all would not be detrimental to many particular interests. Some provisions were subject to the vote, but in each instance, every single argument, query, or concern was responded to with great care and in writing. The assembly met for 166 days, spread over 2 years and 11 months. Its sessions were open to press and the public alike. Inheritance of the nationalist movement. But no constitution is simply a product of the assembly that produces it. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the constitution. Should ensure these principles were formed during the long struggle for freedom. In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited from the nationalist movement. For decades preceding the promulgation of the constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitution. The shape and form of government India should have the value it should uphold the inequalities it would overcome. Answers forget in those debates were given their final form in the constitution. Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought by the Constituent Assembly in the objective resolution moved by the Nehru in 1946. This resolution encapsulated the aspiration and values behind the constitution. What the previous section terms as substantive provisions of the constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the objective resolution. Based on this resolution, our constitution gives institutional expression to these fundamental commitments: equality, liberty and democracy, sovereignty and a cosmopolitan identity. Thus, our constitution is not merely a measure of rules and procedure, but a moral commitment to establish a government that will fulfill many promises that a nationalist movement held before the people. Main point of the objective resolution: India is an independent, sovereign or republic. India shall be union of East while shall be a union. East while British Indian territory, Indian states and other part outside India, British India and Indian states are as willing to be a part of the union. Territory framing the union shall be autonomous. Institutional agreement. The third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the institution of a government. The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like executive, legislature and judiciary. This led to the adoption of the parliamentary form and the federal arrangement, which would distribute governmental powers between the legislature and the executive on the one hand and between the states and central government on the other hand. While evolving the most balanced governmental agreements, the maker of the constitution did not hesitate to learn from the experiment and experiences of other countries. Thus, the framers of the constitution were not adverse to borrowing from the other constitutional tradition. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hand upon any intellectual agreement or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provisions from different countries. But borrowing these ideas were not selfish imitation. Far from it. Each provision of the constitution had to be defined on the ground that it was suited to Indian problems and aspirations. India was extremely lucky to have an assembly that, instead of being parochial in its outlook, could take the best available everywhere in the world and make it their own. So, provision adopted from constitution of different countries. British constitution first passed the post system, a parliamentary form of government, the idea of the rule of law, institution of the speaker, law making procedure. The Irish constitution, DPSP,
French Constitution, principle of liberty, equality, fraternity. United States Charter of Fundamental Rights, power of judicial review, independence of the judiciary. Canadian Constitution, quasi federal form of government, idea of residual power.